I hope the audio and visuals are clear to each and everyone. Ronak, Arsalan, Kumud, Ritika, Zobia. Just let me know if the audio, visuals, everything is clear to one and all over here. Just give me a thumbs up, guys. Sorry for the delay. I don't know what the person has done, the technician. Yeah. Gaurav, good evening. Ronak, okay, perfect. Aslan, all clear, all clear, all clear. Biochemistry is a very like नो बहुत ज्यादा फियर होता है बायोकेमिस्ट्री का ना स्टूडेंट्स के बीच में एंड वी ऑलवेज ट्राई टू नो मग अप थिंग्स बाद में ना रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है कुछ चीजें होती हैं याद करने के लिए बट समझना भी उतना ही जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ओके सो यस टुडे आई विल बी फोकसिंग ऑन लेट अस स्टार्ट विद द overview of the carbohydrate metabolism and glycolysis. Very, very important topic from exam point of view also. Yeah, this is the first class. See, what I have earlier discussed was the basic और बेसिक में से कभी क्वेश्चन नहीं आता हमेशा मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आता है और इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में so that is something which is very well required as of nowadays so yes we will be starting up with the overview of carbohydrate metabolism without wasting much more time and just put the heading as carbohydrate metabolism. Now बहुत सारी साइकिल्स पढ़नी है और सारी साइकिल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए दैट इज समथिंग लाइक विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड तो उसके लिए पहले हम लोग जानते हैं कि ओवरव्यू हमें कौन कौन सी साइकिल्स पढ़नी है तो यू गाइस वेरी वेल नो कि डाइजेशन जो स्टार्ट होता है तो फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद द डाइजेशन प्रोसेस और डायग्राम्स बनाने की आदत तो आप लोग अब तक तो लग गई होगी सब लोगों को so you already know कि we have the stomach okay and whenever you are taking a carbohydrate rich diet what is happening guys it is going down into the stomach okay it is going down into the stomach for digestion okay over here the digestion will take place and my question to you people is Kailash good evening and my question to you people is ki when maltose is digested what is the product when sucrose is digested what is the product mainly we are consuming carbohydrates in the form of maltose in the form of sucrose and in the form of lactose so tell me guys what is the product of maltose digestion okay what is the product of maltose digestion Gayatri good evening welcome to the session yeah Vipin good evening beta good evening to the welcome to the session we are starting with carbohydrate metabolism very very important topic yes Rimsha very good maltose is a disaccharide ये सारे के सारे क्या है डाइसेक्राइड है डाइसेक्राइड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली कंटेनिंग टू पोटेंशियल शुगर यूनिट्स सो दिस डाइसेक्राइड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज as Rimsha very well told yes Ronak it is the glucose yeah it is glucose plus glucose and the enzyme
The enzyme which is responsible for breaking this maltose into glucose, it is maltase. Remember, ACE जहां पे भी रखता है that is counted as enzyme. ACE जहां पे भी लगता है that is counted as enzyme. Now sucrose, it is sucrase, lactase. Just नाम से याद रखना है. Sucrose, it is sucrase. Lactase, it is guys, I hope the audio visuals are fine. I hope you all are able to like see the session. Yeah, just let me know if the audio visuals are fine. So this sucrose and this lactase. This sucrose is further broken down into glucose plus fructose. And lactose is further broken down into glucose plus galactose. So that is the very simplest thing that you all guys know. We have the disaccharides which we are consuming in our diet. Okay, the disaccharides which we are consuming in our diet. Okay, these disaccharides are maltose, sucrose, and lactose, which are further broken down into monosaccharides. Monosaccharides. Okay, and I have a question for you people, and you are going to answer this. Carbohydrates gets digested to form and I need the answer. Carbohydrates जब break होते हैं तो final product क्या होता है? What is the final product of carbohydrates? What is the final product of carbohydrates? So just let me know in the comment section. I just want to test your knowledge कि आप लोग को कितना समझ में आया. हम लोग maltose, sucrose, lactose ले रहे हैं और वो they are broken down, they are digested in the stomach. Okay, माउथ में बहुत कम होता है. Majorly it is in the intestinal part and stomach. So obviously they are broken down into monosaccharides. And just let me know what is the final product of carbohydrate digestion. बेटा एसिटाइल कोलिन कहाँ से आ गया? मैंने तो जो लिखा है आई एम आस्किंग यू डैट ओनली. गौरव नहीं, वो तो पुराना आंसर हो गया ना. Remember guys, the final product of carbohydrate digestion is not only glucose, it is glucose plus fructose plus galactose. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे यहीं पे गलत करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट सिर्फ ग्लूकोज पे टिक करके आते हैं. आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ओनली ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज. कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ओके, इट इज नॉट ओनली ग्लूकोज, इट इज नॉट ओनली ग्लूकोज. Okay, so this is the question that has been like majority of the students too wrong. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक करना है सबसे पहले. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस रिमेंबर कि अब जो डाइजेशन हो चुका है, नाउ व्हाट विल हैपन टू दोस डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स? नाउ these digestive products will enter into a structure that is called as liver. This is called as liver, and these digestive products, okay, they will reach the liver via portal vein. They will reach the liver, okay, they will reach the liver via portal vein. Okay,
तो द एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. So this absorption is taking place via portal way. Portal, basically it is characteristically we are talking about the liver part. Characteristically we are talking about the liver part. So absorption is taking place via portal way. Now this, what is going into the liver, you guys are very well aware that in liver basically we have the glucose, we have the fructose, and we have the galactose. All these three components are entering into the liver. Okay, these are absorbed in the liver. Now what is happening inside the liver, we will see. What is happening inside the liver, just try to understand. This glucose is getting converted into glycogen. This glucose is getting converted into glycogen because you are taking a lot of glucose and glucose needs to be stored. Okay, so this process, it is called as ग्लाइकोजेनेसिस. देखो ग्लाइकोजन का बनना, whenever we say ग्लाइकोजन का बनना, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन. और जेनेसिस का मतलब ही हमेशा क्या होता है, फॉर्मेशन की बात करते हैं ना हम लोग, फॉर्मेशन की बात करते हैं. तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस. नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, ग्लाइकोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस इन विच पर्टिकुलर ऑर्गन? Glycogenesis is taking place in which particular organ? My question to you people, and this question has been asked in multiple times in the exam. Glycogenesis is taking place in which particular organ? चलो, anyone would like to answer? अभी तो मैंने बता ही दिया है बोर्ड पे, उसके बाद भी अगर आंसर्स नहीं दे पा रहे हो भी क्लास में कि नहीं, और shall I stop the session? Yes, it is the liver, Kanchandeep, it is the liver. What about rest, guys? You guys are like, only Kanchandeep, Rimsha is there. So it's better I'll take the session on Zoom then. Why to waste time over here? Only two students are listening, and I'll not leave the lesson for anyone else. Yeah, it is the liver in which it is taking place. And remember, what else is taking place in the liver? It is the glycogen, which is broken down into glucose. Okay, reverse process in which glycogen is broken down into glucose, and this is called as glycogenolysis. Now guys, again with the name, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. लाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन. और किसका ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का, टू फॉर्म ग्लूकोज. तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. सो दिस ग्लाइकोजन इज ब्रेकिंग डाउन इनटू ग्लूकोज. ओके, दिस is breaking down into glucose. Okay, so that is glycogenolysis. Glycogenolysis. तुम लोग हो भी क्लास में, गायत्री, गौरव, इतने लेट, कितना आगे चल चुके हैं हम लोग, पता नहीं कौन से आंसर्स कब दे रहे हो. आई डोंट नो, पता नहीं, या तो सिस्टम लैग कर रहा है. वेस्ट. Now this glucose, all this is taking place in the liver. All this is taking place in liver. So this question has also been asked multiple times in exams. This question has been asked multiple times in exams. Now also remember that
glucose from the liver, it will go into the blood, and from the blood, it will go into the cell. From the blood, it will go into the cell. Now it will enter the cell with the help of transporter that is known as GLUT. That is simply the glucose transporter. That is simply the glucose transporter. That is simply the glucose transporter. So I have only discussed that carbohydrates you take from the mouth and no digestion of carbohydrate takes place. Digestion में आपको ये तीन reactions आप लोगों को पता होनी चाहिए. What are the end products of digestion? You are very well aware it is glucose plus galactose plus fructose. Apart from that, these glucose, fructose and galactose enter into the liver, in which fructose and galactose we will talk about differently. But here you should remember that glucose is no, they combine and form glycogen, and this process is called as glycogenesis. Genesis का मतलब formation होता है, और glycogen का glucose में टूटना, opposite process will also take place in the liver, that is glycogenolysis, that is the breakdown of glycogen. So all this is happening in the liver. So what is the site of glycogenesis, glycogenolysis? Multiple times they have asked in the exam, so that you should know in liver. After that, from the liver, the glucose will enter into the blood. Now from the blood, it will reach the cells of different parts of the body. Now they will enter this glucose will enter the cell with the help of a transporter that is called as glucose transporter. That is called as glucose transporter. I hope till now everything is clear. Just give me a thumbs up, guys, that everything is clear up till now and you are listening. Just give me a thumbs up that you all are listening and it's everything is clear as of now. No, you people are there, not there. Osama, it's okay. What about rest, guys? You are listening also or not? I mean, I have a doubt now. Kumud, okay, Bisha, perfect. Gaurav, Gayatri, Ritika. बेटा रितिका, गेस्ट अपीयरेंस आ रहे हो, बीच में आंसर ही नहीं आते हैं तुम लोगों को. नहीं कर रहे हो अटेंड, नाम के लिए कर रहे हो तो छोड़ दो, वैसे ही मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. Now coming on to what is happening inside this cell. Now coming on to what is happening inside this cell. Now guys, see over here. Now I'm taking the example of a cell, okay? And you already know the cell contains a membrane that is called as cell membrane. The cell contains a membrane that is called as cell membrane. Cell membrane. Now remember guys, what is happening inside the cell? Inside the cell. You already know we have these GLUT transporters. Okay, these GLUT transporters are there. Okay, these are the glucose transporters which help the entry of glucose into the cell. Which help the entry of glucose into the cell. So we have glucose outside and now the glucose is entering into the cell. Now the glucose is entering into the cell. Okay. Now can anyone tell me how many carbon molecules does glucose contain? What is the number of carbon molecules in a glucose? What is the number of carbon molecules in a glucose, guys?
Range responses. Yes, Kanchandeep, Kumud, it is 6. It is 6. Very good, beta. Very good. Osama, it is 6. It is 6. Ritika, 6. Okay, perfect. It is 6. Gayatri, it is 6. Okay. Now, guys, remember. And what is the formula for glucose? Just let me know. Meanwhile, I'm just trying to draw some points over here. Yeah. Now, this glucose inside the cell, if we take one molecule of a glucose, okay, one molecule of a glucose, that is C6H12O6. C6H12O6. Now, what will happen? This one molecule of glucose will undergo aerobic glycolysis. अब बच्चे इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस से उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा. ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है. ये ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकिक्स. बेसिकली इट सिंपली मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस विल फर्दर ब्रेक डाउन. ओके, एरोबिक कहने का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So this particular reaction will take place in presence of oxygen. In presence of oxygen. Yes. In presence of oxygen. Now what will happen? This glucose will further break down into two molecules of pyruvate. Pyruvate. अब ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे. पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. तो कहने का मतलब है नो कार्बन मॉलिक्यूल इज लॉस्ट इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट. ग्लूकोज 6 कार्बन का बना हुआ है. ओके, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ऑफ 6 कार्बन्स. नाउ पायरुवेट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कार्बन्स एंड वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस. That is the product of aerobic glycolysis. So simply we can mention it over here in our notes that no carbon molecule is lost in conversion of glucose to pyruvate. ग्लूकोज टू पायरुवेट. मेरा ये कंसेप्ट बिल्डिंग्स है. रिएक्शंस रट्टे मार लो, वो पता नहीं कैसे उसके बाद आंसर्स करोगे. अगर ये बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ में आता ना, पूरा ओवरव्यू समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन कहाँ कैसे हो रही है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाओगे. तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू फोकस कि अभी आप लोग कितना इसको लाइक इसीलिए आप लोग इसको देख पा रहे हो. तो yes, now these two, okay. Now glycolysis. Okay, this is aerobic glycolysis. Now if suppose there is absence of oxygen, can you tell me any particular cell organelle? Okay, chalo, I'll ask this question later on, but remember that in absence of oxygen also glycolysis is taking place. And you will mention it over here. In absence of oxygen, what is happening? Glucose is converted into lactate. Glucose is converted into lactate, and this is termed as anaerobic glycolysis. Why anaerobic? Because it is taking place without the absence of oxygen. In the absence of oxygen, it is anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis, which is taking place, helps in the conversion of glucose to. रौनक सिर्फ थम्स अप देने से नहीं होता है, क्लास पूरा अटेंड करना पड़ता है ना. बीच में आते हो आंसर्स आते नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक यू आर सिटिंग, इट्स अप टू यू. आप धोखा अपने आप को देते हो तुम लोग, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एट लास्ट आपके रिजल्ट्स आप लोगों को पता चल ही जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम देना ही है, आपके एग्जाम से तो नहीं बच सकते ना. तो इट्स ओके, लाइक पासिंग परसेंटेज आज भी 10% है, तो 1000 में से अगर 10 बच्चे भी आ रहे हैं तो इट्स ओके.
100 में से 10 भी अटेंड करेंगे तो चलेगा, तो इट्स ओके. So glucose is converted into lactate in absence of oxygen, that is anaerobic glycolysis. So all these reactions, guys, all these reactions is happening in the cytoplasm of the cell. So yes, I'll just take this marker. So yes, all this happening. So this glycolysis, just mention it over here. What is the site of glycolysis? It is the cytosol or cytoplasm of the cell. Okay, it is the cytosol or cytoplasm of the cell. Cytosol or cytoplasm of the cell in which glycolysis is taking place. Now, apart from that, guys, we have an organ, okay, that you are very much aware of, that is called as mitochondria of the cell. That is called as mitochondria of the cell. Now, what is happening? This pyruvate will enter into the mitochondria of the cell now. This is mitochondria. And this pyruvate will now enter into mitochondria of the cell. So we have two molecules of pyruvate. We have two molecules of pyruvate, and you are very much aware it is a 3-carbon compound. Okay, 2 moles of pyruvate, 3 कार्बन के 2 पायरुवेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. तो कार्बन मॉलिक्यूल का लॉस तो हुआ ही नहीं. Now this pyruvate will be converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A with the help of an enzyme. I'm just giving you an overview right now कि आपको कौन-कौन सी reactions पढ़नी है. With the help of an enzyme that is called as PDH, that is pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. Now remember that these two molecules, these 3 carbons are again reduced into 2-carbon compound. These are reduced into 2-carbon compound, and this reaction, it is called as the link reaction. Now why it is called as the link reaction? Because it links glycolysis with Krebs cycle. It links glycolysis with Krebs cycle. It links glycolysis with Krebs cycle. Now this acetyl coenzyme A, okay, and remember that this link reaction, my question is, where is this link reaction happening? My question is, where is this link reaction happening? If you are very well aware, that can anyone let me know where is this link reaction happening? चलो अभी सब बता दिया, उसके बाद भी I'm waiting for the answers to. Yes, in mitochondrial matrix. So this link reaction, you can just write it over here. I'll just put so this link reaction, it is happening in the mitochondrial matrix, and this was again a question in the exam. This was again a question in the exam, mitochondrial matrix. And along with the link reaction, Krebs cycle also takes place. Krebs cycle also takes place. Krebs cycle also takes place. So remember, this acetyl coenzyme A will again undergo, okay, it will change into citrate, that is a 6-carbon compound, then to alpha ketoglutarate. We will discuss this in detail. Just I'm giving you an overview. Citrate, and then to alpha ketoglutarate, that is a 5-carbon compound,
Then we have succinyl coenzyme A. Again, I'm missing out the steps, but yes, we will discuss this in detail, so don't worry. And it will change into oxaloacetate, oxaloacetate, and again back to acetyl coenzyme A. Again back to acetyl coenzyme A. Oxaloacetate is also a 4-carbon compound, and this is something which is referred as Krebs cycle, which I think you have already studied in your class 11th, but over here we will also study. So this is the Krebs cycle which is taking place. So Krebs cycle along with the link reaction, it is taking place inside the mitochondrial matrix, inside the mitochondria. What is taking place in the cytoplasm? देखो एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में you will find the link reaction and you will find the Krebs cycle. You will find the Krebs cycle. सो गाइस इन टोटल आपको अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है. सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है दैट इज ग्लाइको. मैं इसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देता हूं कि आप लोगों को पता हो कि सबसे पहले आपको ग्लाइकोजेनेसिस ये रिएक्शन होनी चाहिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये पता होना चाहिए. ये दोनों रिएक्शन लिवर में हो रही है. लिवर के बाद ग्लूकोज कहां चला गया है? सेल के अंदर. ग्लूकोज कहां चला गया है? सेल के अंदर. नाउ इन द सेल, इनसाइड द सेल आप लोगों को पता है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है सर. बिल्कुल ठीक है. एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है. ठीक है. तीसरी रिएक्शन हो गई ये लिंक रिएक्शन जो मैंने आपको इन शॉर्ट अभी बता दिए. फोर्थ रिएक्शन इज दिस क्रेब्स साइकिल. ये क्रेब्स साइकिल पूरा का पूरा जो चल रहा है, ये ग्लूकोज आगे फर्दर कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ग्लूकोज फर्दर आगे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है. तो इन टोटल आपको ये सारी रिएक्शन पढ़नी है. आज मेरा फोकस इस ग्लाइकोलिसिस पे होगा, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन इन पाइरुवेट इनटू पाइरुवेट. इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. आई होप यू गाइस नाउ आर रेडी विद द. तो इन टोटालिटी कि सर ने एक पेज में आपको ये पूरा ओवरव्यू दे दिया, एक पेज में आपको ये पूरा ओवरव्यू दे दिया जस्ट टू मेक श्योर गाइस दैट यू ऑल अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स वेरी वेल. अलग अलग रिएक्शन करवाने वो तो अलग अलग कराऊंगा, ये सारी साइकिल्स बनवाऊंगा, बट उससे पहले आपको एक माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं चीजों को लेके. Just give me a thumbs up guys in the chat box. You are ready for the glycolysis now. You are ready for the glycolysis. और मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा. मैं ऐसा ही नहीं एक साइकिल बनवा के नहीं छोड़ूंगा. I'll discuss this in detail so that आपकी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए. किस तरीके से आपको इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चल रहा है. कार्बोहाइड्रेट माउथ में लेने से लेके पूरा मतलब डाइजेशन की पूरी और फिर एब्जॉर्प्शन और फिर ये सारी रिएक्शंस टू जनरेट एटीपी. यस गौरव, रिमशा, रितिका, परफेक्ट. तो हेडिंग डाल दीजिए ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गायत्री परफेक्ट. चलिए लेट अस स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस. और मेरे हिसाब से कॉपी को ना टर्न कर लीजिए. कॉपी को ना मतलब इस तरीके से रख लीजिए, सीधा नहीं, मतलब इस तरीके से बनाइएगा. लेट मी शो यू गाइस. इस तरीके से यहां से इस तरीके से बनाना शुरू करना और एक कोने से लिखना शुरू करना, क्योंकि मैं साइड साइड कुछ पॉइंटर्स भी डालूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो साइकिल यहां से शुरू करना टॉप से, सीधा मत लिखना. इट विल नॉट वर्क. It will not work. हाँ कंचन जी, तुम्हें तो अभी तक यही नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है क्लास में. मेटाबॉलिज्म, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने पहले बनवाया है, वो तो बनवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स बताए थे पिछले लेक्चर्स में. मेटाबॉलिज्म से ही क्लासेस आते हैं और ये सारी साइकिल्स में तो अभी सब पढ़ाऊंगा ना. अभी तो मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा. मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स के. तो ये पूरा का पूरा अभी हम लोग सारा पढ़ेंगे. तो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और पेपर में यहीं से पूछा जाता है. नो एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड एवरीथिंग. दैट वाज जस्ट अ बेसिक क्लास व्हिच आई डिड बिफोर. ओके,
तो हेडिंग डाल दीजिए। ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis, also called as the Emden-Meyerhof pathway. Meyerhof pathway, that is commonly called as EMP. Now, lysis means breakdown or simply means cut, and this means glycics, which simply means breaking of glucose or sugar. Breaking of glucose or sugar. Now, what is the concept, guys? What is the concept over here? You guys are very well aware that the glucose is broken down into pyruvate. Glucose is broken down into pyruvate. So this is, in turns, there are many reactions which is taking place in between. So we have to discuss all this. So the concept you already know, the glucose will break down into pyruvate. The glucose will break down into pyruvate. अच्छा कमेंट सेक्शन पुराने को ठीक है चल now remember that glycolysis is taking place in a well-fed state. Glycolysis is taking place in a well-fed state. Now guys remember कि you already know कि जब आप खाना प्रॉपर अभी जैसे आप लोगों ने पूरा एक प्रॉपर डाइट लिया है ठीक है बॉडी ने पूरा एक वेल फीडिंग की है ठीक है तो ग्लूकोज का अमाउंट इन बॉडी इज एडिक्वेट ओके नाउ दिस blood glucose is breaking down to release energy and that is called as glycolysis okay so remember that is if a body is in a well fed state what is happening कि आपने खाना तुरंत खाया तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा बॉडी में एडिक्वेट होगा आपने एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की पी ली कोला की तो बॉडी में क्या हो गया ग्लूकोज का अमाउंट विल बी नॉर्मल okay so the glucose is adequate okay and remember the blood glucose is breaking down to release energy it is breaking down to release energy यही ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय यू पीपल फॉर डूइंग सेवरल वर्क नाउ कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ग्लूकोज सेल में एब्सॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन कैन एनीवन टेल मी व्हिच हार्मोन इज दैट क्योंकि देखो नॉर्मली ग्लूकोज सेल के अंदर जा रही है ठीक है नाउ सपोज दिस इज द सेल और ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉर्मली सेल की एक कैपेसिटी होती है कि वो ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेगा बट अब आपने सपोज बहुत सारा मीठा एक बार में खा लिया तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड विल इंक्रीज तो आपको डायबिटीज क्यों नहीं हो जाते अगर ब्लड वेसल में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं तो व्हाई डोंट यू पीपल सफर फ्रॉम डायबिटीज तो आपको तो डायबिटीज हो जानी चाहिए Yes, Osama, it is right. It is the insulin. Very good, Osama Sheikh. अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो आपके एक्स्ट्रा मीठा खाने की वजह से हो गए दैट इज आल्सो एब्सॉर्ब्ड बाय द सेल विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन नॉर्मली सेल ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है पैसिवली दे डोंट रिक्वायर एनर्जी ओके विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड एवरीथिंग बट देयर इज द लिमिट ऑफ द सेल टू
take glucose on their own. After that, whatever amount of glucose is there in the blood, they take inside with the help of a hormone that is called as insulin. That is called as insulin, guys. That is called as insulin. So remember that under influence of insulin, under influence of insulin, glycolysis takes place. Glycolysis takes place. Okay. Now, glycolysis takes place in all cells. Remember, yeah, it takes place in all cells and tissues. And apart from that, it can operate aerobically as well as anaerobically. I already told you aerobic glycolysis takes place in the presence of oxygen. Okay, and anaerobic glycolysis takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. So this I have already discussed. In the presence of oxygen, what will take place, and in the absence of oxygen, this is anaerobic glycolysis. So now, before starting with the cycle, just have 2-3 points that I wanted to discuss with you people for your conceptual clarity. In erythrocytes are basically the red blood cells. The red blood cells. Erythrocytes are basically the red blood cells. Can anyone tell me कि erythrocytes में कौन सा organelle absent होता है? Anyone can tell me erythrocytes में कौन सा organelle absent होता है? Nucleus? No. No, Osama Sheikh. हाँ ठीक है, हाँ न्यूक्लियस होता है बट नॉट ऑफ आवर कंसर्न. नॉट ऑफ आवर कंसर्न. न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है. पिक्नोसिस कहते हैं ना जब वो न्यूक्लियस का लॉस हो जाता है. चल, सबसे पहली बात, एक पॉइंट तो सामा ने बहुत सही कहा. इट कंटेन्स नो न्यूक्लियस. दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल. इट कंटेन्स नो न्यूक्लियस. And apart from that, it contains no mitochondria. No mitochondria. Remember guys, yes, Rimsha, it is correct. If there is no mitochondria in RBCs, what will happen? There will be no oxygen. Now erythrocytes में कौन सी glycolysis देखने को मिलती है? Again, a question to you people. Which glycolysis is seen in erythrocytes? Which glycolysis is seen in erythrocytes? Yes, Osama, perfect. Very good, beta. It is only anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis which is taking place in the erythrocytes. Only anaerobic glycolysis. Yes, Kumar Chauhan, Kanchandeep, very good. It is only the anaerobic glycolysis which is taking place inside the erythrocytes. Now remember that erythrocytes or RBCs, they depend only on glucose. They depend only on glucose for their needs. Okay, and if there is any defect in glycolytic enzymes. ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स कहने का मतलब है जो ग्लूकोज को पाइरुवेट में हेल्प कर रहे हैं. देयर आर सेवरल एंजाइम्स जो अभी मैं आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगा. देयर आर सेवरल एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट, एंड इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन दीज एंजाइम्स, so the glucose will not break down. The glucose won't be utilized by the cell
and it can further lead to a condition that is called as hemolysis. Hemolysis. Hemolysis, हीमो का मतलब क्या हो गया? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन. हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन. Hemoglobin breakdown हो जाएगा तो ultimately the RBCs will die. So that is something which is happening. So that is a clinical correlation, guys, that you have to understand over here. That is a clinical correlation, guys, that you have to understand. Any defect in the glycolytic enzymes where glucose is not being able to utilized by the RBCs, it will result in the breakdown of RBCs, and it is hemolysis. Ultimately, the cell will die. Breakdown of RBCs, okay? Breakdown of RBCs and the cell will die. Yes. Now, this was one clinical condition. I hope everyone understood. Just give me a thumbs up in the chat box that everyone understood what I'm trying to explain right now. Yes, Osama, Gaurav, perfect. Perfect, beta. Kumat, perfect. Perfect, beta. चलो, दो चीजें और देखेंगे इसमें पहले. कमिंग टू द रिएक्शन वाले पार्ट से पहले दो चीजें और. आप लोगों को एक ऑर्गन पता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ लाइक दिस. ये बहुत बड़ा इमोजी जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज आवर हार्ट, हमारा प्यारा दिल. तो इस दिल, इट इज हाईली ससेप्टेबल टू एंजाइना. हाईली ससेप्टेबल फॉर एंजाइना और ऑल्सो कॉल्ड एज इस्कीमिया. अब जिन्होंने मुझसे क्लास अटेंड की थी, मुझे फटाफट से इस्कीमिया या एंजाइना का मतलब बता दो. ओके, why? Because this heart has a very low glycolytic capacity. Less blood supply to the organs. Okay, why? Because it has low glycolytic capacity. It cannot survive ischemia. It cannot survive ischemia. Why low glycolytic? Because it's taking place anaerobically over here also. Anaerobically. Yeah, it can be atherosclerosis or low blood supply to an organ, Gayatri. Perfect, right. Apart from that, guys, remember we have a condition in skeletal muscle also. Skeletal muscle also. And yeah, there is a low blood flow. Yes, Ritika. Low blood flow always, especially during exercise. Especially during exercise. Okay. Now you already know key skeletal muscle, if there is ischemia. If there is ischemia, then skeletal muscle will not die. Why? Why skeletal muscle doesn't die? Yeah, lactic acid is deposited, muscles get fatty. Okay, skeletal muscles don't die. Yes, Kanchdeep, it's right. Will not die. Okay, they will survive ischemia. Okay, they will survive ischemia, low blood supply, because anaerobic glycolysis will take place. हार्ट में तो देयर इज नो चांस ना. हार्ट तो मेजर ऑर्गन हो गया. स्केलेटल मसल्स में तो फिर भी अगर बहुत सारी एक्सरसाइज कर लोगे तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के लेवल्स कम होने की वजह से एनारोबिकली
भी glycolysis चल सकती है skeletal muscle में, and over there will be deposition of lactic acid, as I already told you. Yes, there will be deposition of lactic acid. Okay, so that is something in short about the general conditions that you already know. Now guys, starting with the aerobic glycolysis, put the heading as aerobic glycolysis. We have two glycolysis guys, again reminding you of the fact that we are now going to talk about the aerobic glycolysis and then about the anaerobic glycolysis. Aerobic glycolysis, simply you know, glucose to pyruvate. Now I have to see the series of reaction. Now we have to see the series of reaction over here. सर शूटिंग खत्म हो गई क्या? आकाश, एक तो तुम क्लास में इतनी लेट आए हो और सबसे वाहियात सवाल पूछा है, शूटिंग तो कब की खत्म हो गई है। अभी मुझसे लाइव कुछ भी मत बुलवाओ, मैं ना कॉन्ट्रैक्ट से बाउंडेड हूँ, तो वेट फॉर एवरीथिंग। प्लीज गाइस जस्ट इग्नोर हिम, like I'm not in a mood to. Okay, so we are not talking about the glycolysis. Firstly, guys, I've already told you, just rotate your notebooks and start writing. The site for glycolysis, it is taking place in all organs of the body. I'm talking about the aerobic glycolysis. Aerobic glycolysis. I'm talking about the aerobic glycolysis. Now it is taking place in all the organs. Now the second question you guys are going to answer me, ki what is the organelle in which this glycolysis is taking place? Aerobic glycolysis is taking place where? I want the location. Anyone who would like to answer which organelle, like where it is taking place? No answers, guys? पढ़ क्या रहे हो तुम लोग, पता नहीं. It is taking place in the cytoplasm of the cell. Yeah, the cytosol or the cytoplasm of the cell. It is right, Kanchandeep. Please एक बार में सुनो सारे के सारे ना. गौरव, ओसामा, okay. So yeah. Now in the overview, guys, overview of glycolysis. If you simply want to know glycolysis, what is happening? The glucose, which is a 6-carbon compound, will break down into two molecules, 3 carbon and 3 carbon. Now, these two molecules of 3 carbon will undergo and form pyruvate, and in the presence of oxygen, this pyruvate will form acetyl coenzyme A, which will enter the TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, that is the Krebs cycle, which I have already told you. Okay. Now, if there is anaerobic condition, anaerobic glycolysis, what will happen? This pyruvate will break down into lactate. Write down the steps. The very first step that we will talk about, this is the preparatory phase.
Now in this step, what is happening? It is preparing the glucose. It is preparing the glucose for making more ATP. For making more ATP. In the preparatory phase, remember guys, ATP is consumed. ATP को कंज्यूम करते हैं ताकि और ज्यादा ATP बना सके. Energy is consumed in this phase to make more amount of energy. That is the first key mark that you have to understand. अभी तो पूरा फेज पढ़ेंगे हम लोग, पूरा फेज पढ़ेंगे, don't worry. Apart from that, it is further divided into two parts. The very first one, that is the stage of phosphorylation. Phosphorylation. And the second one, that is the stage of splitting. Stage of splitting. And the second one, that is the payoff phase. Payoff phase simply means the ATP is generated in this phase. The ATP is generated and it is simply referred as oxidation and reduction phase. Oxidation and reduction phase. ATP is generated and it is simply referred as oxidation and reduction phase. So one by one, I will be starting with, and just rotate your notebooks now because I will just start with the cycle. I'll just start with the cycle. So yes, write down the heading as stage of phosphorylation. The very first step, that is the stage of phosphorylation. Okay, stage of phosphorylation that comes in the preparatory phase where ATP is consumed. Where ATP is consumed. So write down stage of phosphorylation. Phosphorylation. Now in this stage, guys, remember what is happening. In this stage, what is happening? You already know we have a molecule that is called as glucose. Now this glucose contains how many carbon? You already know, guys. It contains 6 carbons, right? It contains 6 carbons. I'm just drawing roughly. It contains 6 carbon. You all are aware of this. Now what will happen to this glucose? This glucose will further change into glucose 6-phosphate. Now what is this, guys? Glucose 6-phosphate. Now what is this, guys? Remember that you already know we have 6 carbon. We have 6 carbon of glucose. Now a phosphate group is attached to the 6th carbon. Now a phosphate group is attached to the 6th carbon. That is called as glucose 6-phosphate. Glucose is converting into glucose 6-phosphate. Phosphate group is attached to the 6th carbon. Now where does this phosphate comes from? I already told you that this is energy is utilized over here. So you already know ATP, adenosine triphosphate, will break down into adenosine diphosphate, and one IP, that is one phosphate from ATP, will be attached to this glucose. So there is loss of one. Okay. And over here there is an enzyme which is responsible for transmission of phosphate from this ATP molecule to glucose. It is known as hexokinase, also called as the glucokinase. Glucokinase. Now whenever I use the term kinase, beta, whenever I use the term kinase, remember kinase is an enzyme. Kinase is an enzyme which helps in the transfer of phosphate group from one molecule to another.
मैं कहीं पे भी काइनेज का एग्जांपल ले रहा हूं, काइनेज जहां पे भी वर्ड यूज करो पूरी बायोकेमिस्ट्री में, रिमेंबर इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. नाउ फ्रॉम एटीपी वन फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट जाकर ग्लूकोज से अटैच्ड हो गया, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वो भी 6 कार्बन पे. वी हैव 6 कार्बन्स ना, तो 6 कार्बन पे जाके वो अटैच हो गया, so it will form glucose 6 phosphate. And one question that has been asked in the exam, which enzyme ion is responsible for this particular reaction? Remember, it is the magnesium ion. It is the magnesium ion which is responsible for this particular reaction. It is the magnesium ion which is responsible to this particular reaction. Two, three more points about this reaction. You already know we have this called, which is called as the cell, and this glucose enters the cell with the help of a transport that is called as GLUT, and this is simply which is called as GLUT1. Okay, this is the cell, and these glucose molecules enters the cell with the help of these transporters, and these are called as GLUT transporters, which is commonly known as GLUT1. And remember, this GLUT1 is widely distributed. Widely distributed, हर organ, हर tissue में, and it is bidirectional. It is bidirectional. मतलब ग्लूकोज अंदर गया है तो बाहर भी आ सकता है. Okay? That's why if glucose has to be committed, for cellular respiration, for cellular metabolism, then it is converted into glucose 6 phosphate. Then it is converted into glucose 6 phosphate. रीजन कि ग्लूकोज को ही हमने क्यों नहीं यूज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ग्लूकोज तो सेल के अंदर आया है तो सेल से बाहर भी जा सकता है, तो उसको इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ी, मुझे फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच करना पड़ा टू. Okay, so basically the cell is using the energy to trap the glucose inside the cell, otherwise तो ग्लूकोज बाहर चला जाएगा सेल के. So remember guys, the cell is using energy. Cell is using energy to trap glucose inside the cell. Inside the cell. Okay. Glucose 6 phosphate cannot go back into the blood. It cannot go back into the blood. That's the reason why glucose is converted into glucose 6 phosphate. क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या पहला स्टेप क्लियर है सब लोगों को? मैंने बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया है कि काइनेस का क्या फंक्शन है, व्हाई GLUT1 इज देयर और ग्लूकोज जा रहा है, तो व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. कंचनदीप परफेक्ट. बाकी सब भी हैं चैट बॉक्स में, जो भी 6 स्टूडेंट्स हैं. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर देयर. गौरव, ओसामा, ऋतिक, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, परफेक्ट.
चलो ये भी बढ़िया है। गाइस इस प्रोसेस में ना कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को लिखना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये पॉइंट्स ना साथ में ही नोट्स के ऐड कर देना यहाँ पे। तो साथ में ही कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेना। स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली it traps the glucose for cellular metabolism. Cellular metabolism. Remember that one ATP is required. One ATP is required. First irreversible step. Again मेरा arrow सिर्फ एक ही direction में point कर रहा है. Again guys, my arrow is pointing in only one direction. So remember it is the first irreversible step. Okay. And it is also called as the flux generating step. जहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग, इट इज द फ्लक्स जनरेटिंग स्टेप. एंड वन मोर पॉइंट, इट इज द रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. इट इज द रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. It is the regulatory step of glycolysis. It is the regulatory step of glycolysis. So I hope this is clear to each and everyone, the first step. I hope this is clear to each and everyone, the first step, guys. Sure, Primsha, very good, beta. Now, guys, this was the first step. Now, what is happening? Now, this glucose 6-phosphate. Rimsha, Gayatri, okay, perfect, beta, perfect. Now, this glucose 6-phosphate साइकिल कंटिन्यू करेंगे. वो तो इतनी सारी चीजें हमने लिख ली हैं जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, अदरवाइज आप लोग साइड में भी लिख सकते हो. दिस ग्लूकोज 6-phosphate will get converted into fructose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate will get converted into fructose 6-phosphate. Now guys, again everyone knows the formula for glucose. What is the formula for glucose? C6H12O6. What is the numerical formula for fructose? It is also C6H12O6. C6H12O6. Yes, Rimsha. So this is same formula. Glucose is changing into fructose because it is having same formula with different structure. Yes, Osama, you are very much right. It is the same formula with different structure. It is the same formula with different structure. C6H12O6. Now glucose is changing into fructose. Okay. Now glucose is changing into fructose. And the enzyme which is changing one molecule into another molecule with same formula. Can anyone tell me the name of the enzyme? खुद से ही दिमाग लगा के बता दो क्या होगा एंजाइम का नाम. What will be the name of the enzyme, guys? Yes, it is the isomerase. Isomerase, क्योंकि सेम फॉर्मूला है ना, एक स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है, सो आइसोमरेज हो गया. और क्योंकि ये फॉस्फेट है और ये 6 कार्बन है, तो एंजाइम का नाम आप इस तरीके से याद रखेंगे, फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज. फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज. इज इट क्लियर गाइस? और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, एरोस दोनों तरफ बनाइएगा. इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप, एरोस दोनों तरफ बनाइएगा. It is isomerase because it is changing one form of glucose to another form. And since phosphate is involved and this is a 6-carbon compound, phosphohexose isomerase. Is it clear, guys? Phosphohexose isomerase. Now, guys, why there is a need of change of glucose to fructose?
Why there is a need of change of glucose to fructose? Remember guys that glucose 6-phosphate has so many fates. It can go into uronic acid pathway, HMP pathway, glycogen synthesis. It can go into many other reactions. But if it has to go for glycolysis, then it has to convert it into fructose 6 pathway. Then it has to convert into fructose 6 pathway. Then it has to convert into fructose 6 pathway. Sorry, fructose 6 phosphate. So I hope this is clear to each and everyone. All the both the steps. ये जो साइड में लिख रहा हूँ ना, ये चाहो तो आप यू कैन जस्ट मेंशन इट ऑन अदर साइड ऑल्सो. सिर्फ एक सिंपल रिएक्शंस भी बना लो कि समझते समझते तो पता चल जाएगा. So I am drawing it on the other side because I don't have space down. I'm drawing it on the other presentation now. आप arrow से वहीं continue करेंगे. आप arrow से वहीं continue करेंगे guys. I hope this is clear to each and everyone. Yeah, Kumud, Ritika, perfect. Now this fructose 6 phosphate will get converted into fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate. Now guys, again tell me कि यहाँ पे ATP यूज होगा. देखो अब पहले 6 कार्बन पर ही फ्रक्टोज लगा हुआ था, फॉस्फेट लगा हुआ था. अब फर्स्ट पे भी फॉस्फेट लगा रहे हैं. अब फर्स्ट रिएक्शन पे भी फॉस्फेट हम लोग लगा रहे हैं. So now what will happen? Again the same things will take place. Again the same things will take place. You already know we need a phosphate for this. पहले एक ही फॉस्फेट लगा हुआ था 6 पोजीशन पे. अब दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है 1 और 6 दोनों पे. Now what will happen? 1 ATP will be utilized. ATP utilize हो रही है इसमें, मैंने पहले ही बताया था. It will convert it into ATP. There will be a use of an enzyme that is called as magnesium. Okay, and over here again there will be an enzyme that is called as kinase because we are involving phosphate over here. We are involving phosphate over here. So it will be phosphofructokinase. Phosphofructokinase 1. Just write down like this. Phosphofructose kinase 1. काइनेस ही आप लोगों को सिंपली याद रखना है. काइनेस का मतलब क्या हो गया? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करना है. तो एटीपी से फ्रक्टोज में ट्रांसफर कर दिया. फ्रक्टोज के पहले 6 पोजीशन पे ही फॉस्फेट था, अब फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ गया, तो इट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. Now remember, we'll write some important points about this, that it is the second irreversible step. Second irreversible step. And this enzyme is the rate limiting enzyme. Rate limiting enzyme. इसका मतलब मैं समझाऊंगा. What do you mean by the rate limiting enzyme? It is again a very important question. Rate limiting enzyme. The third point, that is, it is the committed step of glycolysis. It is the committed step of glycolysis. It is the committed step of glycolysis. Why it is called as the committed step of glycolysis? Because fructose 1,6 biphosphate can only enter glycolysis. It cannot go into any other reaction. It will again only enter. That's why it is called as the committed step of glycolysis, or simply I can say it is called as the bottleneck of pathway.
मतलब गर्दन फंस जाती है ना, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। बॉटल नेक ऑफ पाथवे, बॉटल नेक ऑफ पाथवे। तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ नहीं किया सर, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 पाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 पाई फॉस्फेट। आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ ओवर हियर, क्योंकि इसके बाद अब मैं दूसरी रिएक्शन बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड अ स्प्लिटिंग रिएक्शन। हमने स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया, पूरा फॉस्फेट फॉस्फेट लगा लिए सब में, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 पाई फॉस्फेट, याद भी हो क्या होगा। अब हम स्प्लिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग रिएक्शन। एक थम्स अप दे दो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे कि तुम लोगों को समझ आ गया, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द स्प्लिटिंग रिएक्शन। Or do you guys want me to continue or shall I leave it for today? जल्दी से बता दो, कंटिन्यू करूं या रहने दूं, बताओ जल्दी। गायत्री परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। इफ यू आर लर्निंग अलोंग विद मी और ये सारे जितने फ्लो चार्ट्स बना रहा हूं समझ में आ रहे हैं, तो यू शुड लाइक Osama says continue. Sakshi also is like satisfied with what I have discussed right now. Yes. Gaurav says continue. तुम्हारे लिए मैं बोल रहा था, अभी छोड़ने वाला था गौरव कि तुम बोलोगे सर 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गई क्लास। चलो मजा आ रहा है तो आई कंटिन्यू द क्लास। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड लर्निंग, तो फिर आई कैन कंटिन्यू। बाकी सब क्या बोल रहे हो भाई, कंटिन्यू करूं या रहने दूं, जल्दी बताओ फटाफट। वी हैव 2 वर्ड्स फॉर कंटिन्यू। Continue. Gayatri says continue. Okay, Gayatri. Perfect. Now, guys, remember. Now, guys, remember that what is now going to happen? The splitting reaction. The splitting reaction of the glycolysis. The splitting reaction of the glycolysis. What will happen? This fructose 1,6 biphosphate will break down into 2 parts. These fructose 1,6 biphosphate will split into 2 parts. That's why it is called as splitting reaction. That's why it is called as splitting reaction. And over here, the enzyme which is used to split, okay, that is called as aldolase. Remember, this is a reversible step. This is a reversible step. And the enzyme which is responsible for bifurcation, that is called as aldolase, because I'm going to break down a molecule into 2 parts. That's why the enzyme used over here, it is aldolase. Remember, it is responsible for breaking of covalent bond, कार्बन के बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड विदाउट द नीड ऑफ वाटर। ये सब एंजाइम्स में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो, एल्डोलेस इज ब्रेकिंग डाउन द कोवलेंट बॉन्ड विदाउट द नीड ऑफ वाटर, without the need of water. Now this is the reversible step. Now it is breaking down into 2 components. One, it is DHAP. It is a 6 carbon compound. Remember, it is a 6 carbon compound. DHAP is a 3 carbon compound, and G3P, it is also a 3 carbon compound. Now what are these? First we will write down. It is dihydroxy acetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate, and G3P, it is glyceraldehyde.
glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate. Now glyceraldehyde 3-phosphate means कार्बन 3 है और तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है और एल्डिहाइड है मतलब CHO ग्रुप लगा हुआ है. तो glyceraldehyde 3-phosphate थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है. Now this dihydroxy acetone phosphate, okay, will get convert into glyceraldehyde 3-phosphate. यहाँ पे एंजाइम का नाम बता दो. जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? जस्ट लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स. जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल. आई एम जस्ट कमिंग इन 1 minute. Yeah, meanwhile you just type down the answer in the comment section. I'm just coming in 1 minute. Okay, perfect. I'm back. I didn't receive the answers yet, guys. I'm asking a question to you people that, yeah, जब number of carbon molecules same रहते हैं, so which is the enzyme which is responsible for no conversion? No one knows the answer. Very strange. I just discussed it is isomerase. It is isomerase. Yeah. And which isomerase over here? It is phosphotriose isomerase. Phosphotriose isomerase. And remember, it is a reversible reaction. 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 Hello. Hello. Yeah, sir, I'm taking class on YouTube live. I'm live on my channel. I'll just call you back. Okay, guys. Till this step, everything is clear. Just give me a thumbs up, guys. Till this step, everything is clear. Just give me a thumbs up, guys. Till this step, everything is clear. So yeah, it is glyceraldehyde 3-phosphate. That is, yeah, Gayatri, all good, Ritika, all good. Okay. Chal, Gaurav, all good. Osama, all good. Only 4 students attending the session. Rest, I don't know where everyone like left. Okay. Now, guys, this DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. So by this enzyme, so we have 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate that will undergo the further reaction. Okay. This DHAP is converted further into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. From here we will have 2 molecules. We will have 2 molecules. Okay. So yes, I will draw this reaction on the other side. On the other side, we just have to continue. Okay.
it will get converted into 1,3 bis phosphoglycerate. Again by the name guys, again by the name you can see glyceraldehyde पे सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था. अब ग्लिसरल्डिहाइड के वन पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गया है, तो 1,3 बाय मींस 2 phosphate group in the glyceraldehyde part. So yes, over here just remember it is an enzyme. Over here it is an enzyme. Remember the name of the enzyme, it is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, and there is conversion of NAD plus into NADH plus H plus. There is conversion of NAD into NADH plus H plus. Okay. Apart from that, guys, remember that this 1,3 bis phosphoglycerate is getting converted into 3 phosphoglycerate. It is 3 Pg, and remember that ATP is required, means one phosphate is given to ATP to form ATP. Now remember guys, over here the ATP is formed. Over here the ATP is formed. That's why, okay, it is helping in generation of energy. So remember it is called as substrate level phosphorylation. It is called as substrate level phosphorylation. Because one phosphate is being utilized to give energy. I mean it's forming in the like ATP. Okay. And remember it is 1,3 biphosphoglycerate kinase. You already know transfer of phosphate molecule from one transfer of phosphate from one molecule to another, it is done by kinase. So 1,3 biphosphoglycerate kinase will be the enzyme. It will transfer its phosphate group to form to ATP, and it will form ATP. So energy is being generated. Okay. And remember it is the only reversible kinase reaction. बाकी जितने भी काइनेस पड़े वो इरिवर्सिबल थे. ये जितने भी ये वाला जो काइनेस है इट इज ओनली रिवर्सिबल काइनेस रिएक्शन. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड काइनेस, कंफ्यूज नहीं होना. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड काइनेस, कंफ्यूज नहीं होना. So it is only reversible kinase reaction. Apart from that, 3-phosphoglycerate will further break down into 2-phosphoenol pyruvate. Okay, that is 2 Pg, and that is done by the help of an enzyme that is phosphoglycerate mutase. Okay, that is called as isomerase 3. That is called as isomerase 3. Now guys remember mutase का काम क्या होता है? This is a new enzyme, just listen. It is moving phosphate group from one carbon to another on same molecule. Now when we talk about the same molecule, okay, we use the enzyme mutase. Whenever there are two different molecules, this is kinase. So you should know the difference between kinase and mutase. So it is going from the third position to the second position. Okay, and ultimately the last, it will form phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. So that is phosphoenol pyruvate. So yes, this is about the glycolysis guys. This is about the glycolysis.
Rest I will continue tomorrow. I hope you all understood what I tried you people, like I tried to explain to you people. So I hope you enjoyed the lecture. Just please share it with your friends. The ones who missed, kindly watch it. It's very, very important. I'll continue the energy metabolism tomorrow, guys. I'll continue with the energy metabolism tomorrow. Just a small part is left of glycolysis. Then we can discuss anaerobic glycolysis also tomorrow. Okay? We can discuss anaerobic glycolysis also tomorrow. I hope everything is like crystal clear to each one of you. Yeah. Okay. Then Ritika, okay. Gaurav, okay. Osama, okay. So yes, just try to memorize all the steps which we have discussed today. Okay. Just please like the video, comment on the video, and just share it with your friends. That's the least you can do for me. Thank you.